Hey guys, how are you all? I'm Aditya Kashyap and this is CPC MCQ series part 21. ठीक है हम लोग आज part 21 of CPC MCQ series करेंगे ठीक है uh, actually the last video was there was some glitch in that so I came up again live so चलिए शुरू करते हैं CPC MCQ series part 21 ठीक है ना which is going to be very useful for your upcoming APU and judiciary examination ठीक है and any other law entrance examination. And before that, I'm Aditya Kashyap, and today is Mahashivratri, so I'm wishing you all a very happy Mahashivratri. ठीक है? So जय शंकर, जय भोले, ठीक है ना? और हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ पार्ट 21 of CPC. Great. So CPC is a Code of Civil Procedure 1908, and it came into force on 1st of January 1909, and it consists of 158 section and 51 order, and it is applicable to whole of India except the state of Nagaland and tribal area. ठीक है? So this is the overview of CPC. Let's go to the another part. ठीक है? Of that is the question and answer series of CPC. So guys, we have already covered till order 21, and in today's class we will do order 22 and order 23. So let's begin with CPC MCQ series, right? And guys, if you find it helpful, then please do like, share and subscribe and be the part of this family. Thank you. So आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर 22 जो कि बात करता है डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज की ठीक है सो डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है an application for the substitution of the legal representative of the plaintiff who has died has to be moved by so it is moved by the legal representative of the plaintiff ठीक है ना अगर इन केस ऑफ डेथ क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो मूव करेंगे ठीक है ना एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज क्लियरली मेंशन इन ऑर्डर 22 राइट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर the death of the plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the cause of action survive ठीक है ना if the cause of action survive the relief survive the right to sue survive the right to sue survive then in that case death of the plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate ठीक है so this is question number 2 right answer is option C. Question number 3 क्या कहता है with regard to the abatement of suit under order 23 order 22 CPC choose the correct statement देखना है in light of order 22 जो कि बात करता है death marriage and insolvency की ठीक है so proposition 1 क्या कह रहा है ये कह रहा है डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज टू द सूट टू अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव ठीक है पहला सही है ठीक है बट सेकंड क्या है वेयर सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू सर्वाइव द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन शैल कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ टू मेड अ पार्टी एंड शैल प्रोसीड विद द सूट तो ये भी सही है ठीक है थर्ड क्या कह रहा है एनी पर्सन सो मेड a party shall be governed by the pleading already submitted and shall not be entitled to make any defenses appropriate to his character as a legal representative. तो ये क्या है ये गलत है ठीक है ना सो correct proposition है 1 and 2 but 3 is not the correct proposition so the right answer is option A. This is question number 3. Let's move on to question number 4. If you have any doubt regarding any question you can ask me in the comment section. चलिए आगे बढ़ते हैं right and if you find it helpful then please do like share and subscribe. What shall be the status of the suit on the party's death? So it's what will be the status? The death of the plaintiff or defendant will not cause the suit to abate if the right to sue survives, right? So this is question number 4 and right option is option D. आगे बढ़ते हैं question number 5 की ओर. In which of the following cases the right to sue survives upon the death of the party? So a suit for partition of registered property by the co-partner. In that case, the right to sue survives upon the death of the party. But in above the three cases जो की बात कर रहा है dissolution of marriage, future maintenance and contract of betrothal. So इन तीनों केस में आपका right to sue survive नहीं करेगा in case of death of the party. ठीक है? This is question number 5 and let's move on to question number 6. If you have any doubt regarding so far, you can ask me. क्वेश्चन नंबर 6 अबेटमेंट की बात कर रहा है तो अबेटमेंट मींस क्या होता है सो अबेटमेंट मींस होता है सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन एन एक्शन फॉर द वांट ऑफ प्रॉपर पार्टी ठीक है ना ये केवल सस्पेंशन होता है और टर्मिनेशन होता है प्रोसीडिंग का फॉर द वांट ऑफ प्रॉपर पार्टीज ठीक है दिस इज अबेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 राइट
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वेयर अ सूट इज अवेटेड और डिसमिस्ड, वेयर अ सूट इज अवेटेड और डिसमिस्ड, ठीक है, अंडर ऑर्डर 22 सीपीसी ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्या होगा ये? देयर इज नो सूट, नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट, ठीक है ना, इन दैट केस नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट, ठीक है। So this is question number 7. Let's move on to question number 8. Question number 8 बात करता है abatement of proceeding is provided for. So abatement of proceeding is provided for order 22, ठीक है ना, abatement of proceeding provided in order 22. आगे बढ़ते हैं, जो कि बात करता है डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए डाइज leaving behind a son Y and a married daughter Z. A suit filed by X after his death can be continued by, obviously a suit filed by the X can be continued by his legal representative, ठीक है ना। This is order 22 clearly says that. So the right option is option D, जो कि कह रहा है Y and Z both as legal representative can file the suit, ठीक है ना, can proceed with the suit. So this is question number 9, and let's move on to question number 10. If a right to sue survives, will the suit be abated by the death of the party? So if the right to sue survive, then in that case, no, ठीक है ना। If the right to sue survive, will the suit be abated by the death of the party? Obviously no. अगर right to sue survive करता है तो abate नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? Which of the following provision of CPC will be applicable in case of death of one of the several defendant or the sole defendant, ठीक है ना। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर इज ऑर्डर 22 रूल 4, ठीक है, जो कि बात कर रहा है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिपेंडेंट और द सोल डिपेंडेंट, ठीक है। जो रूल 4 है वो बात करता है डिफेंडेंट की, और रूल 3 जो है वो बात करता है प्लेंटिव की, ठीक है ना, इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है if the sole plaintiff dies after hearing of the suit was concluded, the suit shall, so suit shall continue as it is, ठीक है ना, in that case suit shall continue as it is. So this is question number 12. Let's move on to question number 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? With respect to the abatement of the suit under CPC, which is incorrect, incorrect कौन है? So the legal representative will not be allowed to file additional written statement even if such objection could have been raised by the deceased, ठीक है ना। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वेयर द प्लेंटिफ डाइज आफ्टर हियरिंग एंड बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, अगर प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है आफ्टर द हियरिंग, अगर हियरिंग हो गया तब डेथ होता है, तो ये क्या करेगा? ये शैल नॉट अवेट, ठीक है, क्योंकि अब केस अब क्या ही बचा है? केवल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट बचा है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है? Where any party dies after conclusion of hearing and before pronouncement of judgment, in that case suit shall not abate, ठीक है। So, let's move on to question number 16. Let's do it fast, है ना। Where a party dies after the conclusion of hearing and before the pronouncement of judgment, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा it will be deemed that the judgment has been pronounced before the death of the party, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। So question number 17 क्या कह रहा है? On the abatement of the suit under order 22 rule 9 CPC, क्या होता है? रूल 9 क्या कहता है? ये कहता है इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल की बात करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ऑन द अबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 रूल 9 ऑफ सीपीसी, a fresh suit on the same cause of action is barred, ठीक है। So this is correct. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A pleader has a duty to inform the court about the death of the parties under, so it is the duty of the pleader in case of death of the party to inform the court under rule 10A order 22, ठीक है। तो correct answer is option D। ये question number 18, hope you are clear. Let's move on to question number 19. Under CPC, in one situation the contract of engagement of a lawyer will be deemed to continue even after the death of the party. So कौन सा सिचुएशन में ये मान लिया जाएगा? जब तक till the pleader inform the court about the death of the party, ठीक है, जब तक कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं करता pleader about the death of the party, तो उस केस में माना जाएगा कि it is continue, ठीक है ना, even after the death of the party, ठीक है, as a pleader. So this is question number 19. आगे बढ़ते हैं 20। 20 क्या कह रहा है? To which of the cases two provision of order 22 rule 3 and 4, तो रूल 3 एंड 4 मैंने पहले ही बोला। रूल 3 जो है प्लेंटिव के डेथ की बात करता है, रूल 4 क्या है? डिफेंडेंट की डेथ की बात करता है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा? टू विच ऑफ द केसेस डू प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 22 रूल 3 एंड 4 शैल सीपीसी नॉट अप्लाई, ठीक है, सूट पे अप्लाई होगा
ठीक है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट अपील पे अप्लाई होगा, सेकंड अपील पे भी अप्लाई होगा, सो बी पे अप्लाई नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं 21 क्या कहता है, विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी मेक्स ऑर्डर 22 एप्लीकेबल टू अपील। सो ऑर्डर 22 एप्लीकेबल टू अपील, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 22 रूल 11, ठीक है। सो ऑर्डर 22 रूल 11 बात करता है अपील से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 22 एंड गाइस इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हम लोगों ने ऑर्डर 22 कंप्लीट कर लिया जस्ट इन 10 मिनट्स। सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड अब ऑर्डर 23 करते हैं, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। ऑर्डर 23 जो है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर 23 सीपीसी अप्लाइज टू, सो ऑर्डर 23 सीपीसी अप्लाइज टू विड्रॉल ऑफ सूट, ठीक है, वन। आगे बढ़ते हैं सेकंड, ये मैगजीन की बात कर रहा है, इन वीटो बेनिफिशियम नॉन डाटूर रिलेट्स टू विच ऑफ द प्रोविजन, सो इट इज रिलेटेड टू ऑर्डर 23 रूल 1, ठीक है ना, जो की बात करता है विड्रॉल ऑफ सूट की, ठीक है ना, और अबेंडनमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लेम, ठीक है, या तो सूट के विड्रॉल की या अबेंडनमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, होप यू आर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम ऑर्डर 23 जो की बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट। राइट टू विड्रॉ द सूट इज, सो इट इज एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द प्लेंटिफ बिकॉज प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, वेयर अ फ्रेश सूट इज इंस्टीट्यूटेड विद द परमिशन अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, इस केस में क्या होगा, plaintiff shall be bound by the law of limitation as if first suit has not been instituted, ठीक है ना, ऐसा मान लिया जाएगा कि पहला सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं हुआ है और अब जब आप फाइल करोगे तो वो लिमिटेशन पीरियड शुरू से जो काउंट होगा वही होगा। अगर आप बार्ड हो जाओगे तो आप बार्ड हो जाओगे, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन कम्स अंडर फॉर्मल डिफेक्ट, तो फॉर्मल डिफेक्ट की बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 23 रूल 1 सब क्लॉज 3। तो इसमें कौन से फॉर्मल डिफेक्ट आ जाएंगे, अगर वांट ऑफ नोटिस जो कि सेक्शन 80 में कंपलसरी होता है टू द गवर्नमेंट, तो ये फॉर्मल डिफेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, तो ये भी फॉर्मल डिफेक्ट हो जाएगा। इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सूट, तो ये भी फॉर्मल डिफेक्ट हो जाएगा, तो तीनों होगा फॉर्मल डिफेक्ट, करेक्ट आंसर इज डी। होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि कह रहा है इनकरेक्ट को पहचानो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 23, जो कि बात करता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है, अमंग द गिवन ऑप्शन द इनकरेक्ट ऑप्शन आई एम रीडिंग इज व्हेन देयर आर सेवरल प्लेंटिव द कोर्ट कैन अलाउ वन ऑफ देम टू विड्रॉ इवन इफ द अदर को प्लेंटिव डू नॉट कंसेंट टू सच विड्रॉल। ये बिल्कुल ही वाहियात स्टेटमेंट है, सो करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द कोर्ट विल अलाउ अ plaintiff to withdraw a suit and file a fresh suit, so when it is a misjoinder of the party and there is erroneous valuation of the subject matter of the suit, in that case court can allow to withdraw the suit and file a fresh, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, a plaintiff can file a second suit on the subject matter of an earlier suit filed by him, so ये चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, सो द नन ऑफ द एबव, ठीक है। इस केस में क्या व्हेन इट वाज डन बाय द लीव ऑफ द कोर्ट होगा तो ही सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है 8 नंबर। 9, आफ्टर विड्रॉल ऑफ द सूट अ प्लेंटिव, सो आफ्टर विड्रॉल ऑफ द सूट अ प्लेंटिव कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट in respect of the same subject matter unless liberty is given at the time of withdrawal of the suit, that what is that liberty, that is with the permission of the court, ठीक है ना। अब there is some subject matter मतलब वो डिफेक्ट हो जाएगा फॉर्मल डिफेक्ट वाले केस में, ठीक है, क्योंकि दीज आर द, सो दिस इज क्वेश्चन 9 इन सिंपल। आगे बढ़ते हैं 10 पे, कैन अ सूट बी लेड आफ्टर withdrawal of the same, can a suit be led after withdrawal of the same, so answer is yes if the permission is obtained, जो कि मैंने आपको बताया था, from the court at the time of withdrawal with liberty to file a fresh suit, ठीक है। so this is question number 10। अब हम लोग बढ़ते हैं 11 की ओर, and guys if you find it helpful then please do like share and subscribe and hit the bell icon, thank you। Question 11. In case of the withdrawal of the suit by the plaintiff under Order 23, Rule 1A. So Rule 1A क्या बात करता है Order 23 का? ये कहता है when transposition of defendant as a plaintiff may be permitted, है ना। तो यही हो जाएगा आंसर, है ना। Defendant can be transposed as a plaintiff if a substantial question is to be decided against any of the defendant, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है,
Parties to the suit can compromise in a suit. So parties to the suit can be compromised in a suit is mentioned under order 23 rule 3. ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर 23 रूल 3 जो कि बात करता है कॉम्प्रोमाइज की. ठीक है. 13 पे आते हैं. 13 क्या कह रहा है? कॉम्प्रोमाइज अंडर द ऑर्डर 23 रूल 2 रूल 3 में ही कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा है. तो ये क्या होगा? जब भी कॉम्प्रोमाइज करेगा पार्टी तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टी. इट इज द मैंडेटरी कंडीशन ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज अंडर ऑर्डर 23 रूल 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन इज फाइल्ड बिटवीन फैमिली मेंबर. ठीक है. सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन इज फाइल्ड बिटवीन द फैमिली मेंबर. डिफेंडेंट मेक अ काउंटर क्लेम. मैटर इज रेफर्ड टू द mediation and settlement is entered into. ठीक है. Plaintiff paid the court fees on suit. Defendant paid the court fee on the counter claim. In view of the settlement क्या होगा? दोनों पार्टी अगर मेडिएशन से सोल्व हो गया तो बोथ पार्टी आर इंटाइटल्ड टू कंप्लीट रिफंड ऑफ द कोर्ट फी. राइट. So both parties are entitled to complete refund of the court. Well, this is question number 14. Hope you find it helpful. Then please do like, share, and subscribe. Question number 15. Where a decree of compromise which was not lawful. जहां पर डिग्री कॉम्प्रोमाइज का है और वो लॉफुल नहीं है, इस केस में क्या होगा? नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड सच डिग्री. ठीक है ना? दिस क्वेश्चन नंबर 14 15 sorry. And move on to question number 16. A suit filed in representative capacity can be withdrawn. ठीक है. Can be withdrawn, compromised or abandoned by the plaintiff. तो नहीं, केवल प्लेंटिफ से नहीं होगा. ये तभी होगा जब उसको सभी पार्टी को नोटिस दे देगा, तब आफ्टर गिविंग द नोटिस देन इट कैन बी डन. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. ये क्या कह रहा है? एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इन रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट इज सो इट इज वाइड. ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statement incorrect? So among the given option, the incorrect option is person who instituted or joined the suit have unrestricted right to compromise with the defendant. नहीं, ये wrong है. So wrong option is D. ठीक है ना? So guys, this is all from my side for today's part 21 CPC MCQ series. And if you find it helpful, then please do like, share and subscribe. आज मैंने very fast, क्योंकि first session हमारा क्या था? Some glitches was there, so I just come up again with the live session and I completed almost 30 to 40 question in just less than 20 minutes. So if you find it very helpful, which I feel that it is, then please do like, share and subscribe. And this is Aditya Kashyap wishing you all happy Mahashivratri. ठीक है. And I'm taking your leave. Thank you very much. Do like, share and subscribe.